So hi guys, welcome to the third part of atomic structure. Now in this third part of atomic structure, we will be doing with the application of Bohr's postulate. Bohr's postulate पहले ही पढ़ लिए थे, अब हम लोग इसका basically क्या पढ़ रहे हैं? We will go with the application part of Bohr's postulate. Okay, our focus will be more on the techniques of question solving which may help us in the examination. डेरिवेशन में नहीं जा रही हूँ बिकॉज केमिस्ट्री में डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. फॉर डेरिवेशन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. आई एम जस्ट गोइंग विद द एप्लीकेशन पार्ट. सो एज यू नो कि अगर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है तो इट विल रिक्वायर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन इन एन ऑर्बिट. ठीक है. So the total energy of an electron in an orbit is a combination of potential energy and kinetic energy. Okay, and without going into the derivation, I am writing its formula directly. So it is this minus 13.6 into z square upon n square electron volt per atom. Z stands for atomic number and n stands for the number of orbit for which we are talking about. Okay, generally this total energy is represented by the symbol like this. Now electron volt is another unit of energy. Now if you want to convert electron volt into joules, you need to multiply it by charge of electron. And what is the charge of electron? That is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joules. So what is the energy of an electron in an nth orbit? अगर हम करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2.18 मल्टीप्लाई करके देख लेना इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम. अब इसे चाहो तो अर्ग्स में कन्वर्ट कर लेना एंड सो ऑन. फाइन. सो अब इसके कंक्लूजन्स पे हम लोग ध्यान देते हैं जो हमारे पोस्टुलेट से भी रिलेटेड हो जाएंगे. सो फर्स्ट कंक्लूजन, वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या हो गया? चलो एक कंक्लूजन को एट अ टाइम लेते हैं. सो फर्स्ट कंक्लूजन विच आई टेक इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. ठीक है. सो सपोजिंग आई कंसिडर हाइड्रोजन एटम. सो फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू कितनी आने वाली है? z की वैल्यू होगी 1. So when I put the formula, what will be the energy of the electron in the first orbit of hydrogen? कितनी हो जानी है? Into z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर. So ये वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा? दिस सॉल्व करना, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 3.4. अब थर्ड में देखो, सिमिलरली थर्ड में करोगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 का स्क्वायर इज 1.5. तो यहाँ पर देखो, इफ आई सी व्हाट इज हैपनिंग एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज increasing. So what is the conclusion? Means first orbit की energy is always less than that of the second orbit की energy, then third orbit की energy and so on for an atom. और यही तो हमारा पोस्टुलेट्स में भी था कि अंदर वाले ऑर्बिट्स को लेसर एनर्जी चाहिए. जितना बड़ा ऑर्बिट है, जितना बड़ा चक्कर मारोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए. सेकंड कंक्लूजन पे लिए आते हैं. सो वी हैव सीन दैट दिस इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या आता है? सो लेट अस डू दैट पार्ट. तो ई एन क्या हो जाएगा? तो सपोजिंग फॉर हम ले लेते हैं हीलियम आयन. हीलियम आयन का मतलब क्या हो गया? जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? जेड का वैल्यू हो जाएगा 2. सो इफ आई डू इट E1 फॉर हीलियम आयन, वो क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन 1 का स्क्वायर. मीन्स दिस विल रिक्वायर 4 times the energy of hydrogen atom. Isn't it true? मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए. सिमिलरली E2 की वैल्यू अगर निकालते हो, सो व्हाट विल बी
to become 13.6 into again 4 का square divided by 2 का square, that is again 4. So कितना हो गया 13.6 only, which is what? Which is again 4 times the energy of second orbit of hydrogen atom. Isn't it true? So that means what? E1 of hydrogen atom will be lower as compared to E1 of helium, and ये तो मैंने प्रूफ ही कर दिया है. But similarly अगर lithium के लिए करते हो तो it will become even further greater and so on. So isn't it proving that as you increase in the atomic number, more and more energy is required to revolve an electron. कंक्लूजन आता है तो जो हमारा टोटल एनर्जी होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. वो कौन कौन सी टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी. सो हाउ डू यू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी? इसके लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी. फिजिक्स में हमें बताया जाता है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इनटू डिस्टेंस. तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. पोस्टुलेट्स में किया था ना इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर. अब यहाँ से देखो कि एम वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, सी फ्रॉम हेयर इट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें सो what is the relationship? Just check it and tell me. So can I say total energy? Total energy means kinetic energy plus potential energy. Now we know potential energy can be written as minus 2 times of kinetic energy. तो अगर हम इसको put कर दें so what will happen? This will become kinetic energy minus 2 times of kinetic energy. So what is the relationship between total energy and kinetic energy? It comes out to be like this. That means they are same in magnitude, but because kinetic energy cannot be negative, so that is but different signs. Okay, now similarly if I do it for potential energy, so potential energy की value क्या हो जानी है? Potential energy will be 2 into total energy. देखो interesting factors है. One concept that is related to what is the significance of negative sign. If you go and check, the total energy and potential energy are represented with a negative symbol. So what is the significance of this negative symbol? So let us explain that particular point. So what is this? So क्या होता है? So basically क्या होता है? जैसे for example I already know this is the nucleus. What is the positive charge on the nucleus? That will be number of protons as well as charge of one proton. ठीक है. Now what's next? तो if there is charge on the nucleus, इसका एक particular electric field होगा. Supposing इतना electric field है. Okay, move to the next. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है. What does this mean? That the electron, जैसे like स्कूल के बाहर खड़े हुए हो, बहुत दूर हो, that means what? You are a free person. No, you don't have the control of the school. School का कंट्रोल उसकी बाउंड्री के अंदर चलता है, बाहर नहीं. So you are a free electron. What does it mean by free electron? That means तुम्हारी एनर्जी हम क्या मानते हैं? That is zero. So R is infinity. Infinity का मतलब ये नहीं मून पे चले गए. That means you are out of the hold of the nucleus. Okay. अब तुम टहल रहे थे, घूमते 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 घूमते. What is coming next is you come in the electric field of the nucleus. अब क्या होगा? You will experience an attractive force. अब attractive force को avoid करोगे, otherwise what will happen? You'll fall inside the nucleus and तुम्हारी existence खत्म हो जाएगी. प्रिंसिपल के पास पहुंच गए तो existence finish. So what will you do? You will try, कुछ हाथ पैर मारोगे. So similarly it will also try to resist. So in this resistance it is going to lose energy.
Okay, so it will loss of energy. Now how do you represent loss of energy? Obviously you will represent with a negative symbol. अब lose करते 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 इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, फॉर एग्जाम्पल आते आते तुम्हारे टीचर तुम्हें मान गया और प्रिंसिपल के पास नहीं लेके गया, मीन्स वॉट, over here you became stable, and this is the point where attractive force and repulsive forces are equal. मतलब आपने postulates पढ़ा है तो, or you can say the velocity by which you are rotating and the radius of this orbit is sufficient enough to maintain the equilibrium. तो यहाँ पर तुम्हारे जो ऑर्बिट होगा, you loss energy यहाँ से यहाँ तक, so that will be represented with a negative symbol. So see, did you get the importance? The loss of energy is there, that's why we represent it with a negative symbol. Deals with ionization energy or ionization potential. Now in class 9th 10th you might have studied in periodic table what is ionization potential. The energy required to remove an electron, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स, निकल जाता है मीन्स व्हाट, इट लीव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, मूव्स आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ यू आर अ फ्री बर्ड, तो यू बिकमिंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द एनर्जी, or you can say the electron has reached infinity. Infinity of an electron at infinity it is 0. तो अगर किसी वजह से आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 0 कर देते हो, so it will become ionization potential. तो tell me कितनी एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन के पास in an orbit? So let us say it is minus 13.6 into z square upon n square. अब इसको अगर इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर दो, this is it was already having, okay, and this I provide, so what will be the total energy? So now the total energy will become what, it will become 0. 0 means what, it will become a free electron, and it will reach where, it will reach infinity. So when you give energy, loss of energy is represented with negative symbol and giving of energy is represented with positive symbol. तो simple language में बोले तो ionization potential का मतलब क्या हो गया? What is ionization potential? It is nothing but you can say minus of En, or you can say total energy in positive symbol. So इससे related questions आ सकते हैं simple से. चलो, orbit in which the electron revolves, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम लोग लर्न कर लेते हैं, डेरिवेशन यू कैन चेक लेटर ऑन, सो इट विल बिकम इनटू n स्क्वायर बाय z, और इसकी यूनिट्स क्या आएंगे, एंगस्ट्रॉम. अब इसको हम लोग थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं और कंक्लूजन्स निकालते हैं. सो कंक्लूजन्स क्या आएंगे, फर्स्ट थिंग, तो यू कैन से Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया. नाउ अगेन इफ आई टॉक अबाउट, सपोजिंग हम लोग ले लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो फर्स्ट रेडियस 0.529 into 1 का स्क्वायर, ओके. नाउ सपोजिंग आई कॉल इट एज कैपिटल आर. सेकेंड रेडियस की वैल्यू इफ आई गो एंड कैलकुलेट, सो इट विल बिकम into 2 square upon 1, that is supposing I call it as 4r. थर्ड रेडियस की वैल्यू निकालोगे तो into 3 square, and that is 9r and so on. इसका that what does this signify? This signifies that supposing this is my nucleus and this is my first radius of hydrogen atom, so second radius will be somewhere here, okay, fine. Then third radius will come over here, okay, that means fourth radius will be further far away. That means इसका मतलब क्या है, the spacing between them is increasing. See, R2 minus R1 के बीच का distance is 3, then R3 minus R2 के बीच का distance 5R हो गया, and ये 16R है R4, so that means R4 और R3 के बीच का distance और ज़्यादा हो गया. So what is the conclusion? As we move away from the nucleus,
the spacing between consecutive orbits will increase. Isn't it? Interesting factor.